Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaura Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Nitai Gaura Hare Bol. Nitai Gaura Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Nitai Gaura Hare Bol. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada.
Jaya Gurudeva. Gurudev, 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 Jai Gurudev. Jai Shrimad Bhagavatam Grantaraj ki, Patita Pavan ki, Gaura Bhakta Vrinde ki, Hare Krishna Mahamantra ki Jai, Nitai Gaura Premanandi. All glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading today from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 14, Text 21. हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 और अध्याय 4 और श्लोक नंबर 21, अध्याय 14 श्लोक नंबर 21 से पढ़ेंगे। Tam sarvaloka marayagya sangraham Traimayam dravyamayam tapomayam Yagyer vichitrer yajato bhavayate Rajan svadesham anurodhumarasi Tam sarvaroka amaram yagya sangraham Traimayam dravyamayam tapomayam Yagya vichitrer yajato bhavayate Rajan svadeshan anurodhumarasi Tam sarvaroka amara yagya sangraham Traimayam dravyamayam tapomayam Yagya vichitrer yajato bhavayate Rajan svadesham anurodhumarasi
You do the word by word. Hindi. तम उनको सर्वलोक समस्त लोकों में अमर प्रमुख देवों सहित यज्ञ यज्ञ संग्रहम जो स्वीकार करते हैं, त्रिमेयम तीनों वेदों के सार, द्रव्यमयम समस्त सामग्री के स्वामी, तपमयम समस्त तपस्या के उद्देश्य, यज्ञ यज्ञों के द्वारा, विचित्रे विभिन्न, यजत पूजा करते हुए, भवाय उन्नति के लिए, ते तुम्हारी, राजन हे राजा, स्वदेशान अपने देशवासियों को, अनुरोधम निर्देश देना, अर्हसी तुम्हें चाहिए, हे राजन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रमुख अधिष्ठा देवों सहित समस्त लोकों में समस्त यज्ञों के फलों के भोक्ता हैं। परमेश्वर तीनों वेदों के सार रूप हैं, वे हर वस्तु के स्वामी हैं और सारी तपस्या के परम लक्ष्य हैं। अतः आपको आपके देशवासियों को आपकी उन्नति के लिए विविध प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। वास्तव में आपको चाहिए कि आप उन्हें सदैव यज्ञ करने हेतु निर्देशित करें। Translation. Dear King, the Supreme Personality of Godhead, along with the predominating deities, is the enjoyer of the results of all sacrifices in all planets. The Supreme Lord is the sum total of the three Vedas, the owner of everything, and the ultimate goal of all austerity. Therefore, your countrymen should engage in performing various sacrifices for your elevation. Indeed, you should always direct them toward the offering of sacrifices. Next verse, 22. Yagyena yusmad vishayed vijatibir vitayamanena sudakala harena svista sutusta padishanti vanchitam taddedanam narasi virachestitum. यज्ञ से ट्रांसलेशन। जब तुम्हारे राज्य के सारे ब्राह्मण यज्ञ में संलग्न होने लगेंगे तो श्री भगवान के स्वांश समस्त देवता उनके कार्यों से प्रसन्न होकर आपको मनोवांछित फल देंगे। अतः हे वीर, यज्ञों को बंद ना करो। यदि उन्हें बंद करते हो तो तुम देवताओं का अनादर करोगे। Translation. When all the Brahmanas engage in performing sacrifices in your kingdom, all the demigods, who are plenary expansions of the Lord, will be very much satisfied by their activities and will give you your desired result. Therefore, O hero, do not stop the sacrificial performances. If you stop them, you will disrespect the demigods. Text 23. Vena uvacha balisa bata yuyamva adalme dhammamanina ye vrittidam patimidva jaram patim upasate. राजा वेन ने उत्तर दिया, तुम अनुभवहीन हो। ये अत्यंत दुख की बात है कि तुम लोग जो कुछ करते रहे हो वे धार्मिक नहीं है, किंतु तुम लोग उसे धार्मिक मान रहे हो। वास्तव में तुम लोग अपने पालनकर्ता वास्तविक पति को त्याग रहे हो और पूजा करने हेतु किसी जार पर पुरुष की तलाश में हो।
Translation: King Vena replied, "You are not at all experienced. It is very much regrettable that you are maintaining something which is not religious and are accepting it as religious. Indeed, I think you are giving up your real husband who maintains you and are searching after some power to worship." तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: राजा वेन इतना मूर्ख था कि उसने मुनियों को बच्चों के समान अनुभवहीन कह डाला। दूसरे शब्दों में वे उनको सही ज्ञान न होने का दोषी बता रहा था। इस प्रकार उसने उनके उपदेश को अस्वीकार करके उनके विरुद्ध दोषारोपण किया कि वे उस स्त्री के समान हैं जो अपने पालन पोषण करता पति की चिंता न करके जार पुरुष को प्रसन्न रखती हैं, जो उसका पालन पोषण नहीं करता है। इस उपमा का मंतव्य स्पष्ट है। क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वे ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों में लगाएं और राजा को ब्राह्मणों का पालक माना जाता है। यदि ब्राह्मण राजा को ना पूछकर देवताओं के पास जाएं तो वह उतने ही दूषित हैं जितनी की उल्टा स्त्री। Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. King Vena was so foolish that he accused the saintly sages of being inexperienced, like small children. In other words, he was accusing them of not having perfect knowledge. In this way, he could reject their advice and make accusations against them, comparing them to a woman who does not care for her husband, who maintains her but goes to satisfy a paramour who does not maintain her. The purpose of this simile is apparent. It is the duty of the Kshatriya to engage the Brahmanas in different types of religious activities, and the king is supposed to be the maintainer of the Brahmanas. If the Brahmanas do not worship the king but instead go to the demigods, they are as polluted as unchaste women. Om Jnana Timidandasya Jnananjana Sharakaya Chakshurun Meditam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhistam Stapitam Yena Bhutare Swayam Rupa Karamayam Nadadisva Panantikam Andeham Shri Guru Shri Utapadakanam Shri Gurum Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Nagunatam Vitam Tam Sajivam Savetam Savadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Param Sahagana Adita Shri Vishakam Vitam Cha E Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Taptakanshana Gorange Radhe Vrinavanishvare Rishabhanu Sutidevi Pananami Hare Priye Vanshakadpa Tarubhyacha Kipasindi Bhyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So we are reading this chapter now, which is telling the story of King Vena. तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं पास्ट टाइम, ये किंग वेना के बारे में है। The way Vena was put in position of a king was not the perfect solution, but the Brahmanas didn't have many other alternatives. तो राजा वेन जो था उसे किंग का पद दिया गया, बट वो एक सही वो नहीं था कैंडिडेट, मतलब बट तब भी ब्राह्मणों के पास कोई और नहीं था मतलब ऑप्शन, तो उन्होंने राजा वेन को पद दे दिया, राजा बना दिया, वेन को राजा बना दिया। Yeah, it was like the best out of a bad bargain.
तो जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, बेस्ट आउट ऑफ बैड बार्गेनिंग। So, anyway, one good thing he did was to get rid of thieves and dacoits. तो एक ये अच्छा हुआ कि वो उसके बनने पे सबको लोगों को चोर उचक्कों से जो है आराम से छुटकारा मिल गया। Because they were afraid of him, he was cruel and very rough person. तो वो जो था बहुत ज़्यादा निष्ठुर और बहुत ज़्यादा कठोर था। So everywhere he would go in his kingdom, he would inspire just terror and fear amongst the citizens. तो जो राजा वेन था वो बहुत ज़्यादा लोगों को डरा के रखता था, अपने सभी जो प्रजा वालों को था। So everybody was very sad about this situation, and the most sad were the brahmanas. तो इससे सब देख के ब्राह्मण जो थे काफ़ी दुखी हो गए। The sadhus who had installed him as a king, they were very perplexed. तो जब उन्होंने ये सब देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा वो भ्रमित भी हो गए। What to do with this king who is supposed to be the representative of God? तो क्या करें हम इस राजा का जो कि भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, But who is just a demon. और ये तो एक डीमन राक्षस है। So anyway, they tried first the ways of diplomacy. सॉरी Diplomacy. They first tried to speak with him. तो पहले उन्होंने सोचा कि हम इसको समझाएंगे, थोड़ा सा बात करेंगे इसके साथ। And all the verses that you have been reading previously, they were talking about the duty of a king, the religious principles. तो आपने पिछले कुछ श्लोकों में पढ़ा जहाँ पे वो राजा के उत्तरदायित्व को और जो धार्मिक नियम कानून है उनके बारे में बात करते हैं राजा वेन से। It's very interesting because they speak the duties actually of in Varnashram Dharma of the king, of the responsible of the kingdom. तो यहाँ पे वो वर्णाश्रम धर्म में जो एक राजा है उसके क्या उत्तरदायित्व हैं प्रजा के प्रति वो सब बताते हैं। And it is only through wisdom that there is nothing which the Brahmins speak which is not from the Shastra. They speak pure wisdom. तो ब्राह्मणों ने जो सब कुछ भी बोला वो सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों से बोला और उसी के बारे में उसी को कैसे हम विज्ञान में बदल सकते हैं वो बोला। In the first verse of today, there are three words which are quite interesting. Trayimayam, Dravyamayam, Tapomayam. तो आज जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं, जो पहला श्लोक पढ़ा उसमें तीन शब्द हैं जो काफ़ी अच्छे लगे, जो हैं त्रिमयम, द्रव्यमयम और तपोमयम। So it says that the Supreme Personality of Godhead, of course with the predominating deities, is the enjoyer of all the sacrifices. तो उसमें ये लिखा गया है कि जो भगवान है परम पुरुषोत्तम भगवान है वो जो है सभी चीज़ों के सभी यज्ञों के भोक्ता राम है। In all the planets of the universes. और सभी ग्रहों में इस ब्रह्मांड के सभी अलग अलग ग्रहों में ब्रह्मांड के। So Trayimayam, the sum total of the three Vedas. तो त्रिमयम यानी तीनों वेदों का सार। Dravyamayam, the owner of all paraphernalia. द्रव्यमयम यानी सभी संपत्ति के राजा और मालिक। The owner of everything. सभी के मालिक। And Tapomayam, the ultimate goal of all austerities. तपमयम यानी जो भी तपस्या करें उनका जो आखिरी लक्ष्य है वो भगवान की प्रसन्नता होना चाहिए। Vedescha sarver haham eva vedya, Krishna says that he is the goal of the Vedas is to know him. He is the one who has compiled the Vedas. So this is exactly the same thing as here. तो जैसे भगवत गीता में कहा गया है विदेश से हम, तो उस श्लोक में यही कह रहे हैं भगवान कि वेदों को पढ़ना, वेदों का जो है कंपाइलर जो है मतलब वेदों को जिन्होंने लिखा है वो भगवान ही है और यही चीज़ जो है इसमें बताई गई है इन तीनों शब्दों के माध्यम से। In other words, they are saying you should encourage
sacrifice. Not only encourage sacrifice, but you should perform sacrifice all the time. तो वो कह रहे थे कि आपको क्या है, ये यज्ञों को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि बढ़ावा देना चाहिए, आपको खुद भी ये यज्ञ करने चाहिए. And if you encourage people in your country to do sacrifice, this is for your good. You'll be elevated to the higher planets. तो अगर आप ऐसा करेंगे और अपने यहाँ पे प्रजा को यज्ञ करने के लिए कहेंगे तो आपकी जो होगी उन्नति होगी आध्यात्मिक दृष्टि से. So they are giving good advice, and they say after the next verse. तो वो एक उनको अच्छी सलाह दे रहे थे और अब हम अगले श्लोक पे चलते हैं. That if brahmanas in your kingdom are engaged in yajna, sacrifice all the time, then all the demigods are completely satisfied. तो अगर आपके जो राज्य में सारे ब्राह्मण हैं, अगर वो हमेशा यज्ञों में लगे रहेंगे तो सारे देवी देवता आपसे प्रसन्न रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे. In a way, we see that the brahmanas are very diplomatic. They know that this king has a big, huge ego, and they flatter the king. तो हम देख सकते हैं कि ब्राह्मण जो थे वो बहुत ज़्यादा मतलब समझदारी से बात कर रहे थे, क्योंकि राजा वेन जो था उसका अहंकार बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था, तो उसको वो धीरे धीरे कम करना चाहते थे. But he's not so convinced. बट राजा वेन इन सब बातों से जो था उनका हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा था. Actually, although they speak scriptures, the king has another understanding of the scriptures. तो राजा को जो थी शास्त्रों की एक अलग ही जानकारी थी. He has the understanding that all these sacrifices which are recommended in scriptures are just prescribed in order to worship the king, because the king is the representative of God. तो राजा को क्या लगता था, राजा वेन को, कि ये जो सारे यज्ञ जो हैं ये और ये सिर्फ यज्ञ जो हैं उसकी प्रसन्नता के लिए होने चाहिए, क्योंकि वो भगवान कृष्ण का या भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है. So that's where we see the envy of this particular King Vena, where he is not actually pleased to hear words of wisdom, and the goal of yajna should not be God but me. तो इससे हम देख सकते हैं कि राजा वेन में ना इतनी ज़्यादा ईर्ष्या थी कि वो उसकी ये समझता था कि ये जो सारे यज्ञ हैं ना ये उसकी प्रसन्नता के लिए होने चाहिए, ना कि भगवान की प्रसन्नता के लिए. So that's why he's, abusing them with words. Oh, you children, you don't know what everything is about. तो इसलिए वो क्या कर रहा था, अब उनको जो ब्राह्मणों को जो था एब्यूज़ कर रहा था, परेशान कर रहा था और कह रहा था तुम तो एक बच्चे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता. After all, I'm maintaining all of you here. I'm feeding you, I'm giving you wealth. So why you are thinking of someone else to be the enjoyer? तो फिर वो राजा कहता है कि भाई मैं तुम्हारा पालन करता हूँ, मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, पाल रहा हूँ, और फिर भी तुम किसी और के बारे में क्यों सोच रहे हो. So unfortunately this mentality is often there in leaders of society. In the leaders of society you see this kind of mentality. तो हम ये देख सकते हैं कि राजा वेन की जो थी मनोदशा वो आजकल के जो है नेताओं की भी है. Nowadays yajna it's known, finished. We don't talk about yajna anymore. तो आजकल यज्ञों के बारे में बात नहीं होती, यज्ञ खत्म हो गए. People just want to be in a big position to get the most advantageous results of being there. They want all the advantages of being in a position of a president, of a king, or whatever.
तो आजकल के जो नेता हैं वो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बड़े बड़े पद प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे क्या कर सकें, वो अच्छी तरह इंद्र तृप्ति कर सकें और उन सब चीज़ों को भोग सकें. So they very much follow the mood of King Vena. तो आजकल वो जो किंग राजा वेन है उसके मूड को फॉलो करते हैं, उसकी मूड की तरह चलते हैं. In the sense that no need of sacrifice, no need. We are here, we are giving the right decision, we are the ones controlling the whole thing. तो हम हैं यहाँ पे, हम आप लोगों का पालन करता करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आप लोगों के लिए क्या सही है, कोई ज़रूरत नहीं यज्ञ करने की. But we see that in fact, no, they are not controlling anything. They are not even controlling their senses, most of them. तो हम देखते हैं कि वो किसी चीज़ को ना नियंत्रण नहीं कर पा रहे, इवन वो अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रण नहीं कर पा रहे. So the time of saintly kings is gone, far away. The time of? The time of saintly kings अच्छा, is time gone. of saintly king. तो जो हम देख सकते हैं इससे जो अच्छे राजा थे उनका समय अब जा चुका है. And we cannot do anything about it. और हम इसके बारे में अब कुछ नहीं कर सकते. We are reading about saintly kings in the scriptures, but we don't see any example of saintly kings. तो हम देखते हैं, मतलब शास्त्रों में हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे अच्छे राजा थे, संत राजा थे, बट हम आजकल किसी को वैसा नहीं देख पाते. But we know the duty of people in society today in performing sacrifice. बट हम इससे समझ सकते हैं कि जो आज भी लोगों हैं उनको यज्ञ करने चाहिए और ये उनका कर्तव्य है कि वो यज्ञ करें. This knowledge has been given us by Srila Prabhupada, Yagya Sankirtana Prayer Yajjantihi Sumeda Shaha, that by performing the chanting of the holy name, intelligent people in this age will achieve all success. तो ये जो ज्ञान है हमें श्रील प्रभुपाद जी ने दिया था कि अगर हम भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे तो हमें जो भी चाहिए, जो भी हमारे लाइफ में परफेक्शन चाहिए वो हमें मिलेगी इस कलयुग में, पूर्णता, लाइफ की पूर्णता. So we will see in the next verses that King Vena didn't give any attention to the words of the Brahmanas. Nothing. He didn't want to listen. He didn't give any attention to them. तो हम अगले के श्लोकों में देखेंगे कि राजा वेन ने जो है कुछ भी ध्यान नहीं दिया ब्राह्मणों के अच्छे आदेशों और सलाह के बारे में. And we will see also that because he is so cruel and because he is so rough with the people of this kingdom, at some point there's a climax where enough is enough. तो हम देखेंगे कि वो जो था अपने प्रजा लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कठोर था और उनका ध्यान नहीं रखता था, तो फिर अंत में ये होता है कि प्रजा भी सोचती है बस अब बहुत हो गया. And the Brahmanas who have been in the position of putting him as a king, they will have to remove him as a king. तो ब्राह्मण जिन्होंने उसको रखा था राजा के पद पे, उनके पास इतनी योग्यता थी कि वो राजा के पद से उसको हटा भी सकते थे. So that time Brahmanas had some power. तो उस समय ब्राह्मणों के पास शक्ति होती थी. They had the power to install a king as king or remove him. तो उनके पास इतनी शक्ति होती थी कि वे एक राजा को उसके राजा के पद पे बिठा सकते थे, यहाँ हटा सकते थे. But nowadays, Brahmana doesn't have this power, but still they have one power. Main power is to accomplish the yagya for this age. तो अब ब्राह्मणों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं, बट एक शक्ति है कि वो संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं. And this is a most powerful power. और ये सबसे अच्छी शक्ति है. And we have been given this position of doing the yagya for this age, although we may not be qualified, but we have the duty to perform it. तो हमें ये योग्यता दी गई है कि हम इस कलयुग का हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कर सकें. हम इसके लिए योग्य नहीं हैं, पर तब भी ये हमारा कर्तव्य है कि हमें ये यज्ञ करना चाहिए.
And this yagya being performed by us is for the good of society. और जो ये यज्ञ करेंगे हम, ये पूरी जो पूरा समाज है उसके लिए लाभदायक होगा. Gone is the time where the king was the representative of God. Finished. No more. तो अब वो समय बहुत पहले चला गया कि जो राजा जो होता था वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता था. But God has many ways to appear in this world. He's not just appearing through the king. He has so many ways to appear. तो जब भगवान को यहाँ प्रकट होना होता है तो उनके पास काफ़ी सारे तरीके हैं, ये नहीं कि वो राजा के रूप में ही प्रकट होंगे. And so he's appearing in his holy name. तो वो आप सॉरी तो अभी वो कैसे प्रकट हो रहे हैं? अपने हरि नाम में. And this is the way in this particular age of Kali is purifying the whole world, is giving benefits to the whole world. तो जब वो हरि नाम में प्रकट होते हैं, भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं, तो क्या करते हैं कि पूरे के पूरे वातावरण को शुद्ध कर देते हैं, पूरे के पूरे समाज को पवित्र कर देते हैं. So rather than having sages secluded in mountains, in caves, and doing some yagya, personal tapasya, then in this age, particularly, the Lord wants us to go out everywhere to meet the produce. तो पहले क्या होता था कि जैसे ऋषि मुनि होते थे, वो अलग अलग गुफाओं में जाते थे, वहाँ पे यज्ञ करते थे, तपस्या करते थे. बट यहाँ पे क्या है कि भगवान कृष्ण चाहते हैं कि अब हम बाहर निकलें घरों से और लोगों से मिलें और उन्हें भी यज्ञ करने के लिए प्रेरित करें. At the time of Satya Yuga or even after, there were not so many living entities, so many humans living on the planet. तो सत्य युग में इतने सारे मनुष्य नहीं होते थे इस धरती लोक पे, इतने ज़्यादा जीवात्मा नहीं होते थे. So going to the mountains, doing some tapasya was quite normal, part of society. तो वहाँ पे उस समय क्या होता था कि पर्वतों में जाना और तपस्या करना ये एक ना साधारण बात होती थी, काफ़ी लोग इसको करते थे. But the more we see Kali Yuga progress, the more we see so many living beings in a human body. पर क्या हुआ, धीरे धीरे हम अब क्या देखते हैं कि बहुत सारे जीवात्मा जो हैं मनुष्य शरीर में हैं. And finished is the time of small villages, secluded places. Now cities everywhere to put all these human beings. तो अब क्या हो गया कि जो पहले जैसे अलग अलग छोटे छोटे गांव होते थे वो तो बिल्कुल लुप्त ही हो गए हैं, और अब क्या है, शहर आ गए हैं, शहर और बड़े बड़े शहर. So that's the time when a devotee has to be much compassionate. तो अब क्या चाहिए, तो इसी प्रकार भक्त को भी ना अपना जो हृदय होना चाहिए बड़ा ज़्यादा वो होना चाहिए, दया होनी चाहिए उसमें, बहुत ज़्यादा कंपैशन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दया चाहिए उसके हृदय में. Because all these living entities are forgetful of God. क्यों? क्योंकि ये सारे जीवात्मा जो हैं भगवान को भूल चुके हैं. And because they are so miscreants, it is like impossible to even stop them for 5 minutes in a temple. They are so busy. तो अभी क्या है कि जो जीवात्मा है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, कि अगर उन्हें कहो कि मंदिर आ जाओ 5 मिनट के लिए तो उतना भी समय नहीं है उनके पास, मंदिर आके 5 मिनट रुकने का भी. So to come swiftly in their ears through mantra is now the way given to us by Chaitanya Mahaprabhu. You give them the Maha Mantra. You initiate people. This is now Harinam Diksha is given by all of us. तो जैसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें हरि नाम मिला, तो ऐसे ही हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम जाएं और बड़ी तेज़ी से लोगों को पास जाएं और उनके पास उनके कानों में हरि नाम बोलें और आगे उन्हें हरि नाम करने के लिए कहें. The process of receiving Diksha is through the ears. That's what we are doing. We are giving Diksha to people by giving them Hare Krishna mantra. तो जो दीक्षा का प्रोसेस है, दीक्षा का जो है प्रोसेस है, उसमें क्या होता है कि हरि नाम जो होता है कान में बोला जाता है और हम सुनते हैं, हमारे गुरु देते हैं. और अब हमें क्या चाहिए कि हम भी ये चीज़ आगे करें, हम सब लोगों से मिलें और उनको हरि नाम दें.
So we might not be very qualified, we might not have all the qualities of Brahmana, but because we have been given this mission of giving this Harinam Diksha to everyone, then we are empowered. तो हो सकता है कि हमारे में योग्यता ना हो, हमारे में ब्राह्मणों जैसी भी योग्यता ना हो, बट क्या है कि हमें ये कार्य दिया गया है कि हम इस हरिनाम का प्रचार करें, तो इसलिए जब हम ये करेंगे तो हमें चैतन्य महाप्रभु शक्ति देंगे. So we don't have to envy those Brahmins who had power, who could do so many wonders. We have the real power, Brahminical power, given directly by the Supreme Personality of Godhead through the Parampara. It's working. We are here to change the world. We can do it. तो हो सकता है हमें ना उन ब्राह्मणों से ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जो सतयुग के ब्राह्मण थे वो बड़ी बड़ी काम कार्य कर पाते थे, बट हम यहाँ पे अभी कलयुग में हैं और हमारा सिर्फ इतना ही कर्तव्य है कि जाके हम हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार करें जो कि हमें सीधा चैतन्य महाप्रभु से मिल रहा है. Little tapasya is there, yes. We have to go out. We might be willing to stay whole day studying the scriptures, much more comfortable, very gratifying. But yes, tapasya is there. We have to go. Weather, difficulty, noise and all that, not so nice. तो हो सकता है कि इसमें थोड़ी तपस्या हो. क्यों? क्योंकि हम चाहेंगे कि हम आराम से यहाँ पे बैठें और सारे दिन भागवत पढ़ें, हरि नाम करें, बट नहीं, हमें थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा और लोगों को जाके हरि नाम देना पड़ेगा. इसमें हाँ थोड़ी तपस्या तो है. And we might meet many people who don't accept, who challenge us, but this is part of tapasya also. हो सकता है कि हम बाहर जाएं तो कई लोग जो हैं हमें स्वीकार ना करें इसको हरि नाम को और हमारे साथ दुर्व्यवहार करें, बट ये भी जो है तपस्या का ही एक भाग है. As long as we know we are on a mission given by the Gurudev, then we are safe. तो हम जब तक ये समझेंगे कि ये मिशन जो है, ये कार्य हमारे गुरुदेव ने हमें दिया है और हमें इसे आगे बढ़ाना है, तो हम सुरक्षित हैं. Yesterday I was reading a verse saying in the purport, Prabhupada was saying that there is a war going on. तो कल की बात है, कल मैं एक वो पढ़ रहा था भागवतम में श्लोक, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे थे कि अभी युद्ध चल रहा है. And the war is between Maya and the devotees. और युद्ध किसके बीच में है? माया और भक्तों के बीच में. And he was saying that the war is very intense because Maya is very strong. और वो कह रहे थे कि युद्ध बड़ा घनघोर है क्योंकि माया बहुत शक्तिशाली है. But the devotee becomes very fixed up, very fixed up, as long as he has faith in the words of his Gurudev. तो जो भक्त जो हैं वो जो हैं बहुत ज़्यादा अपने उसमें दृढ़ है. क्यों दृढ़ है? किस प्रकार से? क्योंकि उनको जो है अपने गुरु के वचनों में श्रद्धा है. He may be weak, but the Guru is giving strength. हाँ, तो हो सकता है कि भक्त बहुत कमज़ोर है, बट जो उसको शक्ति मिल रही है वो गुरु से मिल रही है. So with confidence we should go on this mission, give our life to this mission. तो हमें चाहिए कि हम भरोसा रखें गुरु के वचनों पे और जाएं इस मिशन को और अपना जीवन दे दें इस मिशन के लिए. And increase the number of devotees in the world. और क्या करें हम कि भक्तों की संख्या बढ़ाएं इस दुनिया में. Because the population of devotees is the only beneficial thing which can happen to this world. तो क्या है इस दुनिया में सिर्फ एक अच्छा कार्य और एक अच्छी चीज कि हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्त बनाएं. Because otherwise this world is going nowhere. It's a dead end. तो क्या होगा, ये जो दुनिया कहीं नहीं जा पाएगी, ये एक तरह से आखिरी उस पे आ गई है अपने पड़ाव पे. How far can they go in building skyscraper buildings, in building highways, fly over?
How far can they go in doing that? Sorry, How far how far? can they go in doing so many construction? तो ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं और बड़े बड़े पुल हैं और ये सब, ये कितना कर पाएंगे हम, कब तक करते रहेंगे? Yeah. Prabhupada is telling us in Gita how the cities are just for passion, raja, and countryside is for goodness. तो प्रभुपाद जी कहते थे जो शहर होते थे वो किसके लिए हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रजोगुण को। और जो ये हैं विलेज, गांव और कंट्री साइड और ये बड़े बड़े गांव और ये सब किसको हैं? ये मोड ऑफ गुडनेस के प्रतीक है, सतोगुण के। But their way of life nowadays is not countryside at all, finished. They just want to put roads, buildings everywhere. तो ये सब जो गांव हैं ये सब अब खत्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जगह शहरों ने ले ली है। So no, rajas is predominating now and tamas. We see that all over the place, everywhere. They pass on laws which are crazy. Like in my country, the last week or so, they have passed a law allowing the ladies to make abortion. Not before, it was there already since a long time, but now they put that in the constitution of the country. तो मैं कुछ दिनों पहले एक देश में था, तो अभी इतना ज़्यादा रजस और तमस गुण का प्रभाव हो चुका है वहाँ पे, और मैं देख रहा हूँ कि जो एबॉर्शन है यानी बच्चे को मारने की प्रक्रिया, वो जो है वहाँ पे अब कानून बन गया है उस देश में। So why put that in the constitution of a country? Because it is a right. It's like we are all same, we have different bodies, we are all the same, all free. That's part of the constitution. Free religion is there in the constitution. So freedom means also for them, I can give life or don't give life, and this is my choice. तो ये क्यों बन गया, मतलब बच्चे को मारने का कानून क्यों बना दिया है? इसलिए बना दिया है क्योंकि जैसे हम सब आज़ाद रहना चाहते हैं, आज़ादी हमारे उसमें कानून में है, तो इसी तरह से ये मेरा जीवन है, मैं किसी को जन्म दूं या ना दूं ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। But look at this stupid president of my country who is saying on one side, very happy, very proud to say, yes, now everybody is free. You can kill your child in the womb. Free, you are free. तो आप देख सकते हैं कि ये कैसा ना बेवकूफ़ी भरा जो है एक तरह से वो है आइडिया है। कैसे? क्यों एक तरफ तो कह रहे हैं हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं। कैसे आज़ाद हैं हम? इस तरह आज़ाद हैं कि हम कोख में ही बच्चे को मार सकते हैं। But at the same time, he's saying, you have to get more children. We don't have enough children in this country. और फिर दूसरी तरफ वो क्या कहते हैं कि इस देश में जो है ना बच्चे अभी बहुत कम हैं, जनसंख्या बहुत कम है, तो हमें क्या करना चाहिए? बच्चे बढ़ाने चाहिए। So stupid, just completely stupid. They don't see the link of killing your own children and having no more children in society. तो बिल्कुल बेवकूफ़ लोग हैं, तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि एक तरफ तो वो अपने बच्चों को मार रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बच्चों को बढ़ाएं, तो इनमें क्या संबंध है उनको समझ में नहीं आता। So this is going on, and this is not good, and everywhere is the same. So we have a very important mission, very important duty. We should every day when we chant japa remember this. तो हमें क्या है कि हमें ये सब देखना चाहिए, समझना चाहिए, और हम एक बहुत बड़े मिशन पे हैं, तो और हमें क्या करना चाहिए? रोज अपना ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। Prabhupada said that in the future historians will say how this movement has saved the world from going to hell. तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो ये पूर्व देश के लोग हैं ये बचाएंगे पूरी दुनिया को नरक में जाने से। And we know how powerful Prabhupada's words and vision are.
और हम जानते हैं कि प्रभुपाद जी के शब्दों में कितनी शक्ति थी और वो कहाँ तक देख पाते थे। Any question? कोई और प्रश्न? Prabhu. Thank you for the class, Prabhuji. Hare Krishna. The question is not directly with the class, but anyway linked also. Can you, since you came for the first time, can you briefly share, Prabhuji, how you came in Krishna consciousness, and any one anecdote or pastime with His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj, so that we also can hear about Maharaj and his glories. You going? Okay. तो प्रभु जी को ये निवेदन किया है कि प्रभु जी किस तरह भक्ति में आए, थोड़ा सा संक्षिप्त से बताएं, और परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के साथ प्रभु जी, क्योंकि उनके शिष्य हैं, तो कुछ महाराज का कोई एक कम से कम एनेक्डोट बताएं, ग्लोरीज बताएं। हरे कृष्ण। You're mentioning Tamal Krishna Maharaj, my Gurudev. He was very keen on giving Krishna consciousness to class and mass. तो परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, वो बहुत ही दृढ़ संकल्प थे और उनकी बहुत इच्छा थी कि समाज के हर वर्ग में जो क्लास के लोग हैं, ऊंचे दर्जे के लोग हैं, उनको भी, और जो बहुत जनसंख्या है उन सबको कृष्ण भक्ति दी जाए। Mass he was giving when he was with Vishnu Jan Swami. They were in a bus all around America. They had a big program with many buses and giving out Krishna consciousness to many students. तो साधारण लेवल पे वो मासेस को, यानी अधिक संख्या में प्रचार कर रहे थे, ग्रंथों के वितरण के माध्यम से कॉलेजेस में जाके। परम वहाँ पे जब बस पार्टी थी उसमें विष्णुजन स्वामी महाराज के साथ। And class, he started at the age of 50. He went back to school. और क्लासेस को कैसे प्रचार किया कि 50 साल की आयु में परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज दोबारा से स्कूल में पढ़ने के लिए गए। Why? Because he wanted to target the intellectual class of society. ऐसा क्यों किया? क्योंकि समाज के जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग हैं उनको प्रचार करना चाहते थे वो। And so he went, it was a tapasya for him. He was 50. He went dressed as a sannyasi in America, Dallas. He went to university. तो उनके लिए तपस्या थी, सन्यासी वेश में थे, 50 साल की आयु में अमेरिका में डैलस में यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने के लिए जाते थे। And there he was like a humble student, very respectful of his masters and teachers, and very concerned about learning, and he had always plus, very good notes. तो बहुत विनम्र शिष्य के रूप में यहाँ पर जाते थे और अपने शिक्षकों के प्रति बहुत आदर सम्मान का भाव रखते थे और क्लासेस को बहुत गंभीरता से अटेंड करते थे और बहुत अच्छे नोट्स बनाते थे। So he did that for a few years. Then after he moved to England in order to go for a PhD in philosophy. तो कई साल तक करने के बाद फिर महाराज इंग्लैंड में शिफ्ट किए ताकि फिलॉसफी में PhD कर सकें। And his topic that he chose for his thesis was the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. और PhD थीसिस का जो विषय चुना परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने, वो था इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद। That was not an easy topic. और ये साधारण विषय नहीं था, आसान विषय नहीं था ये। Because Prabhupada is known all over the world for his books, but is he really accepted by the scholars? This is not sure. तो ये आसान विषय नहीं था क्योंकि प्रभुपाद जी को एक तरफ तो संसार में लोग जानते हैं क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें प्रभुपाद जी की, साथ के साथ जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, शिक्षित वर्ग हैं, क्या वो उतना स्वीकार करते हैं, वो एक प्रश्न था। We know that scholars, they have a tendency to rationalize everything
And when it comes to religion, they are very skeptical, very skeptical. तो जो स्कॉलर्स होते हैं वो हर चीज़ को एनालिसिस तर्क के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं, और विशेष रूप से जब धर्म की बात आए तो बहुत उनका क्षीण दृष्टिकोण हो जाता है. So he had to, because I don't know, some of you went through our PhD here? No? No one? None among us. Anyway, you know something about the thesis. It's not easy. It's not easy. And he had to convince the jury to that, with the intellectual analysis, how this personality, Prabhupada, was changing the world with his movement. महाराज को बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा, और जो जूरी थी उसको ये कन्विंस कर पाने के लिए कि किस तरह प्रभुपाद जी हैं वो पूरे संसार को वास्तव में बदल रहे हैं. And he had to present the philosophy to them in a way, with their words, in a way which is not, the way we are preaching to people in the street, but with their own words, which are always, high language. और महाराज को इस तरीके से प्रचार करना पड़ा कि उन्हीं जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उन्हीं के शब्दों का प्रयोग करके, वो शब्द नहीं जो हम आज साधारण प्रचार में करते हैं, उन्हीं के शब्दों का प्रयोग करके उन्हीं को उन्होंने प्रचार किया. And you know the story. He was doing his thesis, almost completing the thesis, and somewhere or other Krishna called him back in an accident in Mayapur Dam. और हम सब जानते हैं इस घटना को कि किस तरह महाराज ऑलमोस्ट थीसिस कंप्लीट हो गया था, पर किसी भी कारण से कृष्ण का ये प्लान था कि महाराज को वापस बुलाएं, और एक एक्सीडेंट के माध्यम से महाराज का अप्रकट्य हुआ, तिरोभाव हुआ. But his thesis, after some time, was still accepted as a posthumous thesis given to him. परंतु जो थीसिस महाराज ने लिखा था तो उनके तिरोभाव के बाद भी उसको स्वीकार किया गया, और पोस्टमस यानी मरणोपरांत उनके थीसिस को स्वीकार करके वो पब्लिश किया गया. And it's there for staying. It's there for the, many students to come in the future. This thesis about Prabhupada is there. और ये थीसिस है अब उपलब्ध है, क्योंकि आगे के भविष्य में कई विद्यार्थी आएंगे तो उनके लिए थीसिस है, क्योंकि तो ऑफिशियल है. It will be studied by thousands of people. It will be referred to by thousands also of people who go into understanding the Vedic philosophy. तो वैदिक सिद्धांत के ऊपर शिक्षा लेने वाले हजारों विद्यार्थी भविष्य में इसको पढ़ेंगे, और हजारों लोग इसको रेफरेंस इसमें से लेंगे समझने के लिए. And now we have many PhD students in ISKCON who are either in Cambridge, Oxford, or some other American universities, famous ones. और अब ISKCON में कई हमारे भक्त हैं जो PhD किए हैं ऑक्सफोर्ड से, अलग अलग बॉस्टन से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से. So Tamal Krishna Maharaj was always a pioneer. He was the first one to buy the land of Mayapur for Prabhupada. He was the first GBC for India. He was there first in many aspects of our movement. तो परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक पायनियर थे, यानी हर चीज़ की शुरुआत करने में सबसे आगे रहते थे. तो मायापुर का लैंड खरीदने में महाराज का ही हाथ था. फिर इंडिया के पहले GBC महाराज थे. So he was also first in this field, scholarly field of preaching. तो इस तरह ये जो बुद्धिजीवियों को जो प्रचार है उसमें भी सबसे पहले महाराज जी थे. So now we have to follow in different ways, but we had so many wonderful devotees who were pioneers of this movement. This movement didn't come out of nowhere, It came with people, it came with devotees, humble devotees wanting to push forward Prabhupada's desire. तो ये जो आंदोलन है ये अपने आप नहीं आ गया, ये प्रभुपाद जी की इच्छा थी, और कई भक्तों ने, जैसे महाराज थे उनके साथ और भी कई भक्त थे
जो पाइनियर्स थे उन्होंने जिम्मेदारी उठाई, पहला कदम उठाया और उनके माध्यम से आज ये आंदोलन है। And we have to give a lot of respect to all these founders of this movement. Yes, Prabhupada is the founder Acharya, but he had so many devotees, men and women, who were the real founders, the builders of this movement. तो हमें इन सबको आदर सम्मान देना है जो इस आंदोलन के संस्थापक थे। हाँ, प्रभुपाद जी संस्थापकाचार्य हैं हमारे, परंतु प्रभुपाद जी के साथ साथ कई प्रभुपाद के शिष्य, पुरुष भी स्त्री भी, ये सब माताएं और प्रभु वास्तव में संस्थापक थे इस आंदोलन के। And we should always feel stronger now that this movement has developed all over the world, has hundreds and thousands of members. We should all feel as a big family. तो हम सबको अपने आप को बलशाली और एक बहुत बड़ा परिवार के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि अब ये आंदोलन पूरे विश्व में फैल गया है, जगह जगह पे शाखाएं हैं, तो हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है। We are in a family, we are all one body. तो परिवार में हम सब एक ही हैं, एक ही शरीर, एक ही देह है हमारा। And the same we feel. Like I'm here in India, but I don't feel like being in India or in Europe or America. I feel with my family members everywhere I go. जैसे मैं अभी भारत में हूँ, पर मैं ये नहीं सोचता कि भारत में हूँ या अभी यूरोप में हूँ या अमेरिका में हूँ। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ मेरा परिवार है, अपने परिवार के सदस्यों के बीच में हूँ। This is our strength. We should remain together, united, as long as we are not fighting like cats and dogs. तो ये बहुत आवश्यक है कि हम सब आपस में एकजुट रहें, कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़े नहीं करें, बिल्कुल एकजुट होकर रहें। And the more we stay together, the more we can accomplish wonders. तो जितना हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, उतना हम बड़े बड़े अद्भुत कार्य कर पाएंगे। So I come here to also get your blessings so that we can preach in the Western world, which is very, very difficult. People don't want to listen about God. तो हम यहाँ पर इसलिए भी आए हैं कि आप सबका आशीर्वाद दें, ताकि हम जाकर पाश्चात्य जगत में प्रचार कर सकें, क्योंकि पाश्चात्य जगत में बहुत कठिन है, लोगों को बिल्कुल रुचि नहीं है भक्ति में या धर्म में। The only goal of life that the people in the Western world can perceive is sex life. That's the only goal of life. एकमात्र जो लक्ष्य है पाश्चात्य जगत के लोगों का, वो है मैथुन, भोग मैथुन, बस यही है उनको, और कुछ नहीं। So we have a big work. तो हमारे सामने बहुत बड़ा कार्य है। Because Prabhupada said this sex life is shackles which keep you in the prison, in the jail of this material existence. क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये जो मैथुन है या भोग है, ये तो जंजीरें हैं जो हमें इस भौतिक संसार में बांध के रखती हैं। Okay, thank you very much. Any questions? Comments? This temple is very nice, very beautiful. When was it built? Prabhuji, this is a donated property. In 2007 we got, but 2021 we completely refurbished it and made it to ISKCON standard. So October 2021. Very nice. By mercy of Vaishnavas. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Ramo. Hare Ramo. Ramo Ramo. Hare Hare. Srila Prabhupada ki. His Grace Nitai GauraSundar Prabhu ji ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Samit Gaur Bhaktavan ki. So very, very thankful Prabhuji for your wonderful class and association, inspiring for all of us to get the right mood to go out and preach this mission. Thank you very much for coming. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.